This is Imran Pardesi sir, and today I will be continuing the standard 10th maths first chapter number 4 financial planning. In financial planning till now we have seen practice set 4.1, 4.2, 4.3 is completely reduced for you for this year only, okay, and now we will see the practice set 4.4. My dear students, in practice set 4.4 we will see market value, okay, and we will see brokerage. So let me tell you what is market value. एनी किसी भी चीज की एक फेस वैल्यू होती है, ओके. सपोज आई वांट टू सेल दिस फोन, ओके. इफ आई वांट टू सेल दिस माइक्रोफोन, हेलो. सो डियर स्टूडेंट्स, a thing has a value, that is face value. किसी भी चीज की एक फेस वैल्यू होती है. So suppose I want to sell a car, मैं एक कार बेचना चाहता हूँ जिसकी फेस वैल्यू है 7 लाख रुपीस, ओके. बट द सेम इफ आई विल गो इन द मार्केट टू सेल द कार, अगर मैं मार्केट में जाके उस कार को बेचूंगा, so the market value will be different. It means the car face value is 7 lakh rupees, but the market value is 6 lakh rupees. So it means I have to sell that car in 6 lakh rupees only because the market value is 6 lakh rupees, okay. So it means कोई भी चीज बिकती है या कोई भी चीज खरीदी जाती है in the market by its market value, okay. आपकी face value कितनी भी हो, like suppose अगर आप कोई चीज ज्यादा दामों में बेचना चाहते हैं, like suppose you want to sell if you want to sell a mobile phone, okay. If you want to sell a mobile phone in 10,000 rupees, सपोज आपको एक फोन बेचना है सेकेंड हैंड 10,000 rupees में, आपको बेचना है, दैट इज इट्स फेस वैल्यू. But if you will go in the market and you will ask to the phone shop, in phone shop you will ask, sir, this phone I want to sell, how much rupees I will get. So the shopkeeper, the phone shopkeeper will tell you अभी तो इसकी मार्केट वैल्यू चल रही है 8,500 रुपए. It means 8,500 rupees. It means what? Face value is different and market value is different. So we have to sell or we have to buy anything by its market value. क्लियर? आपको कोई भी चीज खरीदनी है या बेचनी है तो हम खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट वैल्यू ओनली. नाउ वी विल सी ब्रोकरेज. व्हाट इज ब्रोकरेज? So my dear students, if somebody wants to sell share, अगर कोई शेयर बेचना चाहता है या कोई शेयर खरीदना चाहता है, so that cannot take place privately. तो शेयर खरीदना, buying and selling of share does not take place privately. वो privately नहीं होगा. For that any person or a body organized by the stock exchange होना ही चाहिए. It means buying and selling of shares हम किसी प्राइवेट में जाके नहीं कर सकते. फॉर दैट स्टॉक एक्सचेंज का एक आदमी होता है या एक बॉडी, एक इंस्टीट्यूट, एक सेंटर होता है जहां पर जाके शेयर होल्डर अपने शेयर बेच सकता है और दूसरा शेयर होल्डर उस शेयर को खरीद सकता है, ओके. सो दैट इज कॉल्ड ब्रोकरेज, ओके. दैट इज कॉल्ड शेयर ब्रोकर. दैट इज कॉल्ड शेयर ब्रोकर, अ पर्सन हु through which we can sell or we can buy share, that is called share broker. अब the transaction takes place, this transaction means buying and selling of share. किसी भी शेयर को अगर बेचना है या खरीदना है, so उस पे you have to pay, that person will take his own rate, that is brokerage, okay. वो उसे बेचने और खरीदने का दलाली, that is called, you can say he or she takes the brokerage. Brokerage means is the amount, वो amount लेगा, पैसा लेगा, फ्री में किसी को बेचेगा नहीं, फ्री में किसी को देगा नहीं. Means if somebody wants to sell, अगर कोई शेयर होल्डर शेयर को बेचना चाहता है, he will come to me. I am a broker, okay, I am a share broker. And अगर किसी को खरीदना है वो भी मेरे पास आएगा. So जो बेचने वाला है उसके पास से भी मैं ब्रोकरेज लूंगा, मैं अमाउंट लूंगा, चार्ज लूंगा, राइट. दैट चार्ज इज कॉल्ड ब्रोकरेज. और अगर मुझे किसी को बेचना है तो मैं उसे बेचूंगा तो उसके पास से भी मैं अमाउंट लूंगा, अपना अमाउंट, मेरा मेहनत, माय वर्क, माय सैलरी और माय percentage. So that is called brokerage, okay. So brokerage is the amount, okay, which I will receive from seller of share or from buyer of share, okay. So this is the introduction. My dear students, now we will see practice set 4.4. In this we will see how a person or a body is selling a share.
कोई एक इंसान या एक बॉडी शेयर बेच रहा है, शेयर। ओके, नाउ सी हियर, मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर, एक शेयर की मार्केट वैल्यू है रुपीज 200। इफ द ब्रोकरेज रेट इज 0.3%, अब वो पर्सन जो ब्रोकर शेयर ब्रोकर है वो 0.3% ब्रोकरेज लेगा। ओके, किसके पास से? मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज रुपीज 200, इफ द ब्रोकरेज रेट इज 0.3%, then find the purchase value of the share. Okay, then we have to find the purchase value. So suppose somebody wants to purchase a share, अगर कोई शेयर खरीदना चाहता है, बाय करना चाहता है from me, so what I will say, I am a share broker, मैं एक शेयर ब्रोकर हूं और मैं किसी को शेयर बेच रहा हूं, I am selling it। तो जो कोई खरीद रहा है, somebody is buying from me, so I will say the share market value of share is 200, उसकी market value है 200, but I will take my charge as a brokerage, पर मैं उस पे अपना चार्ज लूंगा, ब्रोकरेज लूंगा, that is 0.3%। so that उस आदमी को शेयर कितने में पड़ेगा? 200 प्लस ब्रोकरेज, राइट? सो सी हियर, मार्केट वैल्यू MV मींस मार्केट वैल्यू, मार्केट में वो शेयर की वैल्यू है 200 रुपीस, ब्रोकरेज आई विल चार्ज 0.3%। सो फर्स्ट आई विल फाइंड आउट ब्रोकरेज पर शेयर, पहले हम फाइंड करेंगे कि एक शेयर पे ब्रोकरेज कितना रुपीस होगा। ओके, सो सी वी विल फाइंड 0.3% ऑफ रुपीस 200, 200 का 0.3, सो 0.3% मींस 0.3 अपॉन 100, ऑफ means multiply and 200, so 0 will get cancel, what is remain? 0.3 multiply by 2, 2 3s are 6, 2 zeros are 0, so I will take 0.6 or 0.60 पैसे as a brokerage। okay, मैं 200 रुपए तो मार्केट वैल्यू है, बट मैं अपना चार्ज करूंगा एज अ ब्रोकरेज, दैट इज 0.6 रुपीज। सो नाउ दैट बायर, उस बायर को वो शेयर कितने में पड़ेगा? सो परचेस वैल्यू पर शेयर इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू, तो 200 रुपए है प्लस ब्रोकरेज 0.6, सो अ शेयर, एक शेयर मिलेगा 200 रुपए और 60 पैसे। ओके, यू कैन से देयरफॉर परचेस वैल्यू ऑफ अ शेयर इज रुपीस 200.6। आई होप यू अंडरस्टूड। brokerage means what? Amount which that share broker will take from buyer also and share buyer also and share seller also। okay, now pay attention here, a share is sold, एक शेयर बेचना है for the market value of rupees 1000, उस शेयर की मार्केट वैल्यू है 1000 रुपीस, मार्केट में किधर भी बेचूंगा मैं शेयर, so I will get 1000 रुपीस, but brokerage is paid at the rate of 0.1%, but brokerage means if I want to sell, मेरे पास कोई बंदा आया कि I want to sell my shares, so I will sell the share with the 0.1 brokerage, मैं एक शेयर के ऊपर 0.1% का brokerage लूंगा, that is my charge। so that is what is the amount received after the sale? so market value थी 1000 rupees, one share, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, एक शेयर की मार्केट वैल्यू है रुपीस 1000, ब्रोकरेज आई विल टेक 0.1%, सो 0.1% 1000 का निकालो, सी ब्रोकरेज पर शेयर 0.1% ऑफ रुपीस 1000, 1000 का 0.1% कितना हुआ? दैट इज 1 रुपी। सी 0.1 upon 100 multiply by 1000, 0 will get cancel, answer question whatever will remain 0.1 multiply by 10, so you will multiply, answer will come 0.01, that is 1 rupee। okay, so selling price per share, अब मैं उस शेयर को बेचूंगा, so I will say market value 1000 rupees minus brokerage, उसमें से ब्रोकरेज माइनस होगा 1 rupees, that is rupees 9999, 1000 minus 1 rupees 999, that is 999, so the amount obtained on the selling the share is rupees 999। Who will get that? जो मेरे पास बेचने के लिए आया था, मार्केट वैल्यू 1000 रुपए थी, I will take my charges brokerage, that is 1 rupee, so 1000 में से 1 rupees I will keep and 999 rupees I will give that seller, जो बेचने आया था उसको मैं दूंगा कि तुम्हें तुम्हारे शेयर के मिले 999, मार्केट वैल्यू 1000 थी, पर मैंने अपना चार्ज लिया ब्रोकरेज, दैट इज 0.1, तो आपको मिलेंगे 999 रुपए, राइट? अब मैं उस शेयर को बेचूंगा तो ऑफ कोर्स मुझे 1000 से ज्यादा मिलेगा, इट मींस व्हाट? द शेयर ब्रोकर इज इन द प्रॉफिट, शेयर ब्रोकर को प्रॉफिट है, वो बायर के पास से भी ब्रोकरेज लेगा और सेलर के पास से भी ब्रोकरेज लेगा। इज इट क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड दिस।
So dear students, after question number 1 and 2, we will see question number 3, and here we have to fill the boxes. The table is there, okay, 2 rows are there, and we have to fill according to the mentioned heading, subtopics. Please pay attention here. Fill in the blanks given in the contract note of sale and purchase of shares. B for buying and S for selling, right? So see here, this kind of table is given in your textbook. See, number of shares 100, B for buy, okay, they want to buy. See here, so here we will do the addition, right? See, he wants to buy 100 B means 100 shares they wants to buy. Market value of share means एक share की value है 45 rupees. So total value will be how much? So we have to do the calculation. Number of shares 100, market value of a share is equals to rupees 45. So total value will be 100 multiplied by 45, rupees 4,500, rupees 4,500. Okay, total value 100 shares, one share market value 45, total 4,500, that is 4,500. Now see, brokerage 0.2%. So we will find out brokerage 0.2% of 4,500, that is 4,500 का 0.2% हम निकालेंगे. 0.2% of 4,500 is 0.2 means 0.2 upon 100, of means multiply 4,500. So this is 0, 0 we will cancel, the remaining we will multiply, answer will come 0, 9.0, it means it is 9 rupees. So here we will write brokerage, I will pay rupees 9, okay, rupees 9. Now 9% GST brokerage, okay, 9% GST on brokerage, 9% GST on brokerage here, so 9% SGST on brokerage. So see, we have written here CGST is equals to SGST. So CGST is equals to 9% of rupees 9% on brokerage. Brokerage कितना पे कर रहे हैं 9 rupees. So 9% of 9 rupees. 9% CGST on brokerage. Brokerage is rupees 9. So 9% of 9, that is answer will come. This can be written 9 upon 100. We can write 0.09, right? Multiply by 9. So answer will come 0.81. So CGST is equals to rupees 0.81. So SGST also will be same. SGST is equals to rupees 0.81. So here answer will come rupees 0.81. Here also will come same 0.81. So the total value of the share. Now you will do the totaling. See, 4,500 plus 9 rupees plus 0.81 paise, 0.81 paise. See, I have done here the addition. Total value of the share 4,500. Okay, 9, 0.81, 0.81. So I have considered this like I have put the 0 where the zeros were required, and the answer will come rupees 4,510.62 paise. So you will write at the end the total value of the share will be 4,510.62 paise. So like this only you will solve this below row also. So my dear students, now we will see the question number 3, the second row. See, 75 shares they want to sell. So in the first row we have done the addition because 100 shares they want to buy. For buying we will do addition, and while selling, when we are selling it, we will do the subtraction. Okay, while buying we will do the addition, and while selling we will do the subtraction. So 75 number of shares are there, and market value of one share is 200. So see, a number of shares 75s, market value of a share is rupees 200. So we will multiply 75 will multiply to 200. 75 to the 150 and 20. So total value of these 75 shares will be rupees 15,000. Okay, 15,000. Now we will find brokerage 0.2%, okay, or 15,000. So 0.2% of rupees 15,000 will be 0.2 upon 100. Of means multiply 15,000. 0, 0 will get cancelled. The remaining 0.2 multiplied by 150, answer will come 030.0. So it is 30 rupees. So we will write here rupees 30. So we will subtract 15,000 minus 30. So it will come 14,000 and something 970. So now we will see the next one. This 9% CGST on brokerage. Brokerage is 30 rupees. So see, CGST is equals to HGST. CGST is equals to 9% of rupees 30. Brokerage पर GST और CGST निकालना है. So 9% means 9 upon 100. We can write 0.09. This can be written is like this. 30 as it is. We will multiply. Answer will come 2.70.
So CGST rupees 2.70, HGST also rupees 2.70. So you will write over here rupees 2.70, you will write here rupees 2.70. What the total value of that 75 number of shares? So here we will do the subtraction. Why we will do subtraction? Because they want to sell it, वो बेचना चाहते हैं. So while selling we will do the subtraction, and while buying, जब हम buy कर रहे हैं तब we will do addition. Okay, now we will subtract, so answer will come rupees 14,964, rupees 14,964.60 paise. So this is how you have to solve the question number 3. You have to calculate and then you have to fill the empty boxes. I hope you understood. First write down the question. While writing the solution, you will write the table again and below you will calculate. नीचे आप solve करेंगे, calculation करेंगे, then you will fill the boxes. Okay? I hope you understood here. So thank you so much and best of luck.